Dear students, today discuss about the determination of equivalent mass of acid. Before class, we discuss equivalent mass, gram equivalent mass, variable equivalent mass. Now discuss equivalent mass of acid. Equivalent mass of acid. Firstly, you must know what is acid and how to evaluate the equivalent mass of acid. The acid आमे काहाकू कहिबा फर्स्ट ना जो सब्सटेंस टी हमको H+ आयन प्रोड्यूस करिवो दबो ताके आमे कहि थाउ एसिड बोली तना आमे कहि परिबा द सब्सटेंस which can liberates means produce or donates which can liberates H+ ion in any medium is known as acid. The substance which can liberates H+ ion in any medium is known as acid. Example आमे कहि परिबा HCl can produce H+ and Cl-. So HCl is known as one acid. Similarly, H2SO4 can ionize to form 2H+ plus SO4 minus 2. So H2SO4 or sulphuric acid is known as another acid. Similarly, CH3COOH that is known as acetic acid. It will produce CH3COO minus plus H+. As it can liberate or produce H+ ion, so it is called as acid. That is name is acetic acid. Similarly, COOH bond COOH that is called oxalic acid. It ionizes to form oxalate ion plus 2H+ that can produce H+ ion, so it is also known as acid. Now for acid you have to calculate one term that is called basicity. एसिड आम इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन करने को हेले आमको बेसिसिटी बोले गोटे जिनस उपरे आमको जीवाई पड़ो जे क्या आम बेसिसिटी कहवा. सिंपल कथा गोटे मोल एसिड आमको जेतिकिटा H+ आयन प्रोड्यूस करिवो दैट इज नोन एज बेसिसिटी. तेणु डेफिनेशन टी आम जीवा द नंबर ऑफ H+ ion produced from 1 mole of acid is known as basicity. The number of H+ ion produced from 1 mole of acid is known as basicity. Example, HCl basicity is 1 because 1 mole of hydrochloric acid can produce 1 number of H+ ion, so its basicity is 1. For sulphuric acid H2SO4 basicity is 2. So for acetic acid CH3COH
basicity is 1. COOH that is oxalic acid कहिछि मु this is oxalic acid ionized to form 2 number of H plus ion, so basicity is 2. Similarly, other examples are for phosphoric acid that is H3PO4 basicity is केते कहबा हमें 3, basicity is 3. phosphorus acid phosphoric acid सेटा एटा हला phosphorus acid PO3 basicity is 2 कहीं कहबा. Similarly, boric acid formula is H3BO3 basicity is 1. एक्सेप्शनल केस ये दीटा देख जदि आमको 3टा H अच्छी किंतु बेसिसिटी आर 2 रोचे आर बेसिसिटी 1 रोचे कहीं एक्चुअली आम जा तार स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग उपरे आम देखा जतिकिटा H ऑक्सीजन को अटैचमेंट होइथिबो सेतिकिटा H बाहरिबो आ जतिकिटा H सेंट्रल एटम को अटैच होइथिबो से केभे रिमूव हो पारिबो नाही. तेणु ये तार स्ट्रक्चर आम केमिकल बॉन्डिंग रे शो करवा 2टा H ऑक्सीजन को अटैचमेंट रोचे तेणु जिते बाहर से 2टा H बाहर आउ गोटे H B को अटैचमेंट होची से बाहर ना से भाई गोटे H आमको इजिली रिमूव होची तेणु आम कहीपरु बेसिसिटी इज 1. नाउ नो the acid and basicity. How to calculate the equivalent mass of acid? How to calculate? Now, equivalent mass of acid can calculate by the formula now equivalent mass of acid equal to molecular mass of acid divide basicity तो आम क्वेश्चन रखा calculate the equivalent mass of following acids जो एसिड गुड़ा आम सब देचे सही मानकर इक्विवेलेंट मास बाहर करवा. सपोज HCl H2SO4 नाइट्रिक एसिड HNO3 एसिटिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस एसिड बोरिक एसिड युड़ा सब आम कौन कर इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन कर भर आम गोटे करदे बाकी तुम मन रहा तुम्हें निजे कर. Suppose you have to calculate the equivalent mass of sulphuric acid. That formula is H2SO4. Firstly, you determine the molecular mass. Molecular mass is nothing but equal to 2 into atomic mass of hydrogen plus 1 into atomic mass of sulfur plus 4 into atomic mass of oxygen. 2 into atomic mass of hydrogen plus 1 into atomic mass of sulfur plus 4 into atomic mass of
oxygen, which is equal to 2 into 1 plus 1 into 32 plus 4 into 16. 2 plus 32 plus 64 equal to 98 AMU. AMU full form janicho atomic mass unit. Now basicity is kete? Basicity for sulphuric acid is 2. अतः equivalent mass of sulphuric acid equal to molecular mass of sulphuric acid, that is 98 by 2 basicity equal to 49. This is known as the equivalent mass of sulphuric acid. तेणु बाकी अन्य गुड़ा सेमती निजे तुम काढ़ अलरेडी कही तुमको बेसिसिटी कहार केते तुम्हें मोलेकुलर मास बाहर करदेव बाहर कर दे कि बेसिसिटी डिवाइड करदेव देन यू हैव टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड. देन सेकेंड आम जा डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस. equivalent mass of base से भाई आगे आम फास्ट नो व्हाट इज बेस एवं बेस सेमती आम गोटे टर्म जा एसिडिटी तापर आम डिटरमाइन करवा इक्विवेलेंट मास बाय यूजिंग द फॉर्मूला. फास्ट व्हाट इज बेस बेस आम क्या कहवा ना आम जाने दो सब्सटेंस व्हिच कैन लिबरेट or produce or donate or gives hydroxide ion means OH minus is known as base. जोटा आम कहू जनरली क्षारीय एसिड टाक आम कहू अम्ल बेस टाक कहू क्षारीय. तो आम से कह द सब्सटेंस which can liberates hydroxide ion means OH minus. Hydroxide ion is known as base. Example, Na which can ionize to give Na plus OH minus, so it is called base. Similarly, NH4OH ionized to form NH4 plus OH minus. CaOH whole 2 calcium hydroxide ionized to form Ca plus 2 OH minus. AlOH whole 3 ionized to form Al plus 3 OH minus. तेणु आम कहीपर दोज आर नोन एज बेस एवं बेस आम गोटे टर्म पढ़ा एसिडिटी. Similarly, the number of hydroxide ion obtained from 1 mole of a base is called acidity. As 1 mole of sodium hydroxide can produce 1 number of OH minus ion, so acidity is 1. Similarly, 1 mole of ammonium hydroxide can produce 1 number of OH minus ion, so its acidity is 1. Calcium hydroxide 1 mole produce 2 number of OH minus ion, so its acidity is 2. Aluminum hydroxide can produce 3 number of OH minus ion, so its acidity is 3. सेटा में लिखि देबा डेफिनेशन द नंबर ऑफ hydroxide ion that means OH minus ion. Hydroxide ion obtained from 1 mole of base is called acidity.
उदा आम एग्जांपल कहि परिबा सपोज NaOH acidity is 1 NH4OH acidity is 1 acidity is 1 CaOH whole 2 means calcium hydroxide acidity is 2 AlOH whole 3 aluminum hydroxide acidity is 3 तेणु मन रखिबो बेस पई आमे एसिडिटी काढिबा एसिड पई आमे बेसिसिटी काढिबा नाउ नो द बेस एंड अबाउट एसिडिटी देन टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस equivalent mass of a base can be calculated by using the formula equivalent mass of a base equal to molecular mass of a base divide acidity क्वेश्चन रखेबा सेमती हमें calculate the equivalent mass of a following bases बेस गुड़िक किए आम कहीपर NaOH KOH FeOH whole 2 ferrous hydroxide FeOH whole 3 NH4OH CaOH whole 2 AlOH whole 3 MgOH whole 2 etc. Bottom amejiba suppose you have to calculate the equivalent mass of ammonium hydroxide. Firstly determine the molecular mass of ammonium hydroxide. तेणु प्रथम आगे molecular mass काढ़िबो जो बेस उड़ा दिया है तापरे एसिडिटी तार जानिबो तापरे तुमे काढ़ी परिबो तार इक्विवेलेंट मास बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला नाउ molecular mass equal to nitrogen number is 1 hydrogen 4 plus 1 5 oxygen 1 so molecular mass equal to 1 into atomic mass of nitrogen plus 5 into atomic mass of hydrogen plus 1 into atomic mass of oxygen which is nothing but equal to 1 into 14 plus 5 into 1 plus 1 into 16 equal to 14 plus 5 plus 16 equal to 35 AMU जानी है तो नाइट्रोजन गोटे थिला गोटाकर मास 14 हाइड्रोजन 4 plus 1 5 है 14 5 19 प्लस ऑक्सीजन 16 तेणु 19 16 हेले आम केते कहि परिबा 35 AMU नाउ एसिडिटी फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1 नाउ equivalent mass for ammonium hydroxide equal to molecular mass divide acidity means 1 equal to 35
तेणु से भाई तुम्हें कौन कर इक्विवेलेंट मास आउ जो अलग बेस गुड़िकर दिखाई है तुम्हें ताको डिटरमाइन कर नाउ टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस देन थर्ड वन आम जा जे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट आम केमिति डिटरमाइन करबा equivalent mass of salt आगे सल्ट आम क्या कहवा ना सल्ट आम कौ जो ओडिया आम कौन लुण बोली कहू नुहे सल्ट गुड़िक आम खाई दौचे तेणु सबू सल्ट गुड़िक केवे आम खाईपर ना कहीं सोडियम क्लोराइडटा सल्ट आम खाऊे आम देहपाई रेजिस्ट सी किंतु कपर सल्फेट गोटे सल्ट आम खाइबा आम देहरे किसी काम करिबो नहीं बा देह को असुविधा पकेब सोडियम कार्बोनेट गोटे सल्ट आम खाइबा देह को असुविधा पकेब तेणु सल्ट को आम जनरली तीन भाग में आम कर विभक्त कौ अनुजाई तार पीएच भैल्यू अनुजाई पीएच बोली गोटे तुम 10 ले जानी जे जो मानकर पीएच भैल्यू लेस देन 7 हुए ताको आम एसिडिक सल्ट एसिडिक कहवा जो मानकर पीएच भैल्यू 7 रहिबो से हला न्यूट्रल जो मानकर 7 को पारे जीवो से हला बेस तेणु जो मानकर पीएच भैल्यू जो सल्ट सॉल्यूशन लो पीएच भैल्यू लेस देन 7 हबो से हला एसिडिक सल्ट जो पीएच भैल्यू सल्ट सॉल्यूशन लो 7 हबो से हला नॉर्मल सल्ट जो सल्ट सॉल्यूशन लो पीएच भैल्यू ग्रेटर देन 7 हबो से हला बेसिक सल्ट जो तीन प्रकार क्लासिफिकेशन कहूचे तार डिटेल आम डिस्क्रिप्शन तुम 12 क्लास आम अच्छी देखा बर्तन फाइन जस्ट आम कहवा जे सल्ट क्या हाउ टू इभालुएटेड और हाउ टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्ट जे व्हाट इज सल्ट ना जनरली आम बर्तमान एसिड पढ़िले बेस पढ़िले तेणु हुए एसिड रिएक्ट विथ बेस एसिड जिते बेस सहित मिसिब टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज नोन एज सल्ट तेणु आम से कह व्हेन एन एसिड reacts with base to form a new substance is known as salt एग्जाम्पल देखा कहे सपोज HCl तुम्हें जानी गोटे एसिड NaOH जानी गोटे बेस तेणु एसिडे बेस सहित कंबाइन हेले आमको सृष्टि कला NaCl प्लस वाटर जनरली आम पाइबा यही जो पाइले नुआ सब्सटेंस टे दैट इज कॉल्ड सल्ट तेणु यही अन्य एग्जाम्पल सल्ट अच्छे आम कहीपर Na2SO4 K2CO3 K3PO4 Al2SO4 MgCO3 Na3PO4 Mg3PO4 whole 2 AlPO4 etc. So those are the various salt. How to determine the equivalent mass of salt? तो equivalent mass हमें केमिति बाहर करिबा ना फॉर्मूला होची equivalent mass of salt equal to molecular mass of salt divide number of metal atom into its valency प्रत्येक सल्टर प्राय देखिबो प्रथमे जोटा थाए सेटा मेटाल एटा सब
एवं आउ गोटे कौन कौच नंबर ऑफ मेटाल एटम से मेटाल एटम पाद पाखक देखिए केते अच्छी से तार नंबर एवं जो मेटाल एटम तुम्हें चूज कल से मेटाल एटम वैलेंसी केते तेणु सल्टर मॉलिक्यूलर मास काढ़ीदेव डिवाइड नंबर ऑफ मेटाल एटम इंटू इट्स वैलेंसी रख तेणु क्वेश्चन तुमको युवा दिगला कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट सोडियम सल्फेट पोटासियम कार्बोनेट पोटासियम फॉस्फेट एल्युमिनियम सल्फेट मैग्नीशियम कार्बोनेट सोडियम फॉस्फेट मैग्नीशियम फॉस्फेट एल्युमिनियम फॉस्फेट एगुड़ा सब इक्विवेलेंट मास बाहर कर सपोज आम गोटे जा बर्तमान मनकर सल्ट जा Na2SO4 बा NaCl कथा आम कहवा NaCl इज सल्ट ना फर्स्ट कैलकुलेट द मोलेकुलर मास इक्वल टू 1 into एटॉमिक मास ऑफ सोडियम सोडियम एटॉमिक मास हो 23 प्लस 1 into एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्लोरीन एटॉमिक मास हो 35.5 which is equal to 23 plus 35.5 equal to 58.5 AMU. This is the molecular mass for sodium chloride. Now the metal is sodium, number is 1. Sodium is present 1 number. Number of sodium is 1. Now the equivalent mass equal to molecular mass means 58.5 divided number of metal atom 1 into valency for sodium is also 1 sodium रा valency 1 बोली तुम्हें जानिଛ equal to आमे करदेबा पाई जिबा सही 58.5. Now this is the equivalent mass for sodium chloride. तेना आम कही परिबा 58.5 टा इक्विवेलेंट मास कहार सोडियम क्लोराइड से तुम्हें अन्य सल्ट गुड़िकर इक्विवेलेंट मास तुम्हें डिटरमाइन करि परिबो निजे हला बुझियला देन आम जिबा आउ हमको रहिला इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन तेणु आम नेक्स्ट क्लास रे देखिबा जे इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन आम केमिति बाहर करिबा आयन केते प्रकार डिटेल ता विषय आम देखिबा थैंक यू।